Okay, we will start, right? I'll just message on screen. Okay, right. We can start now, right, everyone? Just be responsive. ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आना तो बताते रहना. Okay, so I'll start with very basic. Okay, so good morning, everyone. We have 12 people over here. Aditya, Avni, Avya, Prahlad, Kritagya, Navya, Nitin, Puneet, Sanchit, Satvik, Tanish, Meghna, Janvi. Okay, right. So first of all, can anyone tell me what is the meaning of relative motion? Because this is the first thing that we have studied when we talked about motion, don't you think? बताओ guys, tell me. मैंने जब वेक्टर्स पढ़ाया था है ना, तब भी मैंने बोला था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट? Yes, with respect to, correct. So if I talk about our motion right now, for example, if I'm sitting on my chair, right, and if you're sitting on your chair watching the class, tell me, are you on rest or are you in motion? Very first question that we started with. Exactly, Prahlad, right? The answer, right, would be, or the question, the better question would be, sir, with respect to what? Yes or no? What is the frame of reference, right? What's the point of observation? Understood? Which means that there's nothing like absolute rest or absolute motion. Everything is in rest or in motion with respect to something or some observation point, right or not? Tell me. Sanchit? Yes? Right? Anna? Yes. So I can say that, okay, in simpler words, right? If I have to just say in English, I can say, okay, sir, my speed with respect to anything or related to anything, right, is nothing but the relative speed. Yes or no? Think about it. Yes or no? Right? I'll just take a classic example of this that you have taken. Anna, suppose everyone is sitting on train, Anna, right? Classic example. How many of you remember that song, Chal Chaiya Chaiya Chaiya, where Shah Rukh Khan just dance on the roof of the train? Anyone remember? Right? Yes, Puneet. Very good, है ना? So if suppose there are some other dancers also, है ना? Other dancers also on the roof, right? So according to dancer A, Shah Rukh Khan would be on rest or he would be in motion. Tell me. Think about it. Obviously rest, right? But if someone is standing outside or on the platform, so according to this person B, he will be in motion. Yes or no? Makes sense, no? First, let's try to understand the very basic concept. Okay. And in class 9, we have studied something. Okay, sir, if we have an object A, right, or person A, and suppose we have a person B, if they are moving in opposite direction, right, in opposite direction, suppose the velocity of this is VA and the velocity of this is VB, what would be the velocity of A, है ना, with respect to B? Tell me. बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक यूनिडायरेक्शनल, याद है? अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो क्या होता है? ऐड अप होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? टेल मी. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी ऑलरेडी नो, है ना? वेरी गुड आदित्य, है ना? ये क्या होगा सर? ऐड अप हो जाता है सर, VA प्लस VB हो जाता है. यस और नो? राइट? बचपन में VA प्लस VB ना प्रहलाद, थिंक अबाउट इट ना. कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा. कॉमन सेंस, दिमाग लगाओ, दिमाग.
मान लो कि तुम दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हो, राइट? सो तुम लोग जल्दी मिलोगे कि लेट से मिलोगे? सोचो, ऐसे ऐसे सोचो, जल्दी मिलोगे लेट से मिलोगे? जल्दी मिलोगे, फास्टर, राइट? सो अगर if you will meet faster, then the speed will be more or less? More. Then it will be addition or subtraction? Common sense, right? Yes or no? This is very, very basic common sense, right? And we know that, sir, if they will move in same direction, है ना? चोर पुलिस, right? Suppose B क्या है? Thief है, और ये क्या है? पुलिस है. तो क्या होगा? Velocity of B with respect to A और velocity of A with respect to B क्या होगा? Correct, है ना? Right? Yes or no? Negative हो जाएगा, right? ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं अभी शो कर रहा, माय बैड, वेक्टर साइन शो नहीं कर रहा बिकॉज इट इज यूनिट एक्शन. तो आई गेस ये बहुत बेसिक है, ये हमें आता है. वी ए माइनस वी बी ना, कि वी माइनस वी, बताओ वी माइनस वी बी, है ना? बेसिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है. हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन सोच ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, है ना? वो क्या प्लस हो क्या माइनस हो तो डायरेक्शन पे आ जाएगा ना, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वैल्यू एज सिंपल, वेरी भवेश, है ना? ओके, वेरी गुड. Now let us see. Okay, sir, ये तो हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है, but how this is same as what we have to study in our current chapter. Okay, so I hope all of us know vectors, right? All of us know vectors. Prerequisite, सबको vectors आता है ना? नहीं आता तो मैं डंडे से मारूंगा आके वहां पे, राइट? मैंने पढ़ाया है, vectors आता है ना सबको, आया ना, राइट? भावेश प्रहलाद. Now tell me one thing. Suppose this is a vector A. This is vector A, right? This is vector B. Okay. And this is vector C. Suppose this is vector A, this is vector B, and this is vector C. What can we write? Tell me. What can we write? Prerequisite. क्या लिख सकते हैं बताओ? Vector A, correct. Vector A plus vector B is equal to vector C. Yes or no? हाँ या ना? ये सबको समझ में आ रहा है? Very good अव्यय, very good भावेश, very good आदित्य. Yes or no? Any vector, and I told you the application of vectors, application of this. Now how this concept is used in relative motion. Now let us try to understand first. हम लोग कुछ याद नहीं करेंगे, सोचेंगे. Okay, think about it. Very basic. Same train का example लो, train का example, ठीक है? Right, हम लोग same train का example लेंगे वाला, ये train का example. Now suppose ये train जो है, ये train है, ट्रेन मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये शाहरुख खान ऊपर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, किस डायरेक्शन, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पे कोई बी है, बी को चाहिए, बी को पता लगाना है भाई शाहरुख खान का स्पीड क्या है ना? थिंक अबाउट इट, राइट? बहुत बेसिक ऐसे सवाल आते हैं, हाँ या ना? ऐसे ही सवाल आते हैं ना? टेल मी. तो क्या नहीं सर, बी जो है वो तो रेस्ट में है ना, बी जो है वो ग्राउंड पे है, हाँ या ना? टेल मी, बी ग्राउंड पे है, यस? सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, सर आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ शाहरुख खान, हाँ या ना? हाँ या ना? किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? टेल मी. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ऑसम, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. तो क्या, ओके सर, बट शाहरुख खान तो ट्रेन पे दौड़ रहा है, हाँ या ना? यस और नो? थिंक अबाउट इट. शाहरुख खान तो ट्रेन पे दौड़ रहा है, तो क्या होगा सर? वेलोसिटी ऑफ शाहरुख खान विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन पहले लेंगे, है ना? फिर ट्रेन कितना स्पीड से मूव कर रहा है, राइट? फिर ट्रेन कितना स्पीड से मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. यस और नो? हाँ या ना? सोचो, पहले सोचो, आराम से सोचो. शाहरुख खान दौड़ रहा है ट्रेन पे और ट्रेन आगे चल रहा है, राइट?
तो शाहरुख खान का ट्रेन के रिस्पेक्ट में लेंगे और ट्रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे. यस और नो? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? Right? So in general, can I say that in general, right? Suppose we have two frame of reference, right? Think about it. Suppose एक है A, एक है B और एक है C. तीन तीन ऑब्जेक्ट, राइट? A B C है ना? A B C तीन ऑब्जेक्ट A B C. So velocity of A with respect to ground मान लो given है. Velocity of B with respect to ground given है. Velocity of C with respect to ground given है ना? तो ये समझिए वेक्टर हो गया ना, ये A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर हो गया, हाँ या ना? राइट. बट यहाँ पे दिक्कत है सर, यहाँ पे ए बी सी और ये ए बी सी वेक्टर सेम नहीं है. अब कैसे? कॉमन सेंस लगाएंगे, आप कॉमन सेंस लाएंगे. ठीक है सर, हम देखते हैं. अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो क्या लगता है क्या होगा? थिंक अबाउट इट. सोचो, सबको अपने सोचेगा क्या होगा. मान लो तुमको किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट, ऑब्जेक्ट है ए बी सी, ए का रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, बी का रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, सी का रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है. एग्जांपल लो, जैसे तुम कार में बैठे हुए हो, है ना, राइट? ए इज यू, बी इज कार एंड सी इज ग्राउंड, है ना, सपोज, राइट? तो तुम कार में बैठे हुए हो, राइट, और कार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, ऑब्वियसली चल रहा है. तुमसे पूछा है, ओके व्हाट इज योर वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू कार? टेल मी. सोचो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सोचो एक बार, एवरीवन. क्योंकि यही दिक्कत होता है, अगर एक बार ये क्लियर हो गया ना तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा. ना, एक चीज बताओ, हमने यहाँ पे, राइट, हमने यहाँ पे ए बी सी, राइट, सपोज ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है. अब यहाँ पे तुम एक चीज देखो, स्टेप बाय स्टेप एक चीज देखो. सर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, हाँ या ना? यस और नो? राइट. प्लस अब एक चीज बताओ, जब तुम कार में बैठते हो, जब तुम कार में बैठते हो, तुमको क्या लगता है? तुम आगे जा रहे हो कि बाहर की चीजें ग्राउंड पीछे आ रही हैं? ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं. टेल मी. ग्राउंड इज मूविंग बैक, यस और नो? राइट. और यहाँ पे सवाल क्या है? ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना? ए का रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट होना चाहिए, राइट? तो डोंट यू थिंक सर यहाँ पे क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, हाँ या ना? ये चीज याद है कि सर ये सेम होना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? टेल मी. वेरी गुड जानवी. यस और नो? पुनीत, सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? आदित्य, as I said, right, if you talk about this velocity of A with respect to B, है ना, right? यहाँ पे velocity of A with respect to ground है. तो अगर तुम प्लस कर रहे हो तो ये देखो with respect to ground है, so it should be velocity of ground with respect to B. यहाँ भी सेम होना चाहिए अगर तुम यहाँ पे प्लस साइन डाल रहे हो, ठीक है? बिकॉज इफ यू सी रिलेटिव, राइट, सो ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए से बी, राइट, और बी से सी, बी से सी, राइट, क्या होता है? ये ए से बी है ना, ए से बी, देन बी से सी गिव्स ए से सी, ए से सी. यस और नो? हाँ या ना? स्टेप बाय स्टेप. अब समझ में आया संजित, पुनीत, सपोज में आया? ए से बी देन बी से सी विल गिव यू ए से सी ना, राइट? सो दिस एबीसी कैन बी एनीथिंग, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट. हियर वी आर फोकसिंग ऑन वेलोसिटी, राइट? ओके. नाउ टेल मी, तुमको क्या वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिस्पेक्ट टू बी गिवन है
और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है. क्या गिवन है? What is given? B with respect to ground, right? So we know that, sir, velocity of B with respect to ground is nothing but negative of velocity of ground with respect to B. Yes or no? स्टेप बाय स्टेप सोचो, कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है. तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब समझ में आ सबको? हाँ या ना? अब समझ में आ रहा है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एनीवन हैव एनी डाउट? बताओ इसमें. और अगर यही मैं तुमसे एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? मैं एक्सेलरेशन भी क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डोंट यू थिंक इट वुड बी सेम? सो इट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to ground minus acceleration of b with respect to ground. Yes or no? Okay, is this clear? Tell me. है ना? चलो अब इसका स्पेशल केसेस लेते हैं, राइट? स्पेशल केसेस लेते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है. आई गेस बेसिक क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना वन डायमेंशन वाले. जैसे अगर ये इस स्पीड से जा रहा है और उसके पीछे कोई सपोज thief is running at this speed and police is catching up with this speed, what was the time that will take by the police to catch the thief and all those kind of questions हो जाएंगे बेसिक वन डायमेंशन वाले. तो मैं रिवर बोट प्रॉब्लम में बाकी सब करवाऊं? रिवर बोट प्रॉब्लम ठीक है, जो काफी फेमस होता है, तुम लोग निकलता है ना? चलो ठीक है. ओके सो इसका एप्लीकेशन हम लेते हैं. तो एप्लीकेशन से सबसे तुमको एक क्वेश्चन से करवाता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन इज दिस. सो द क्वेश्चन इज, जस्ट ड्रॉ यूजिंग दिस. Just remember the concept of vectors. That's it. That's all you have to do. है ना? So this is what we know. This is east. This is north. Yes or no? है ना? Okay. So the question is this: two ships A and B, two ships A and B, okay, are 10 kilometer apart, right? So distance between A and B is 10 kilometer. 10 kilometers. Okay. On a line running south to north. अब the south to north में तो कौन सा line हो गया? Tell me which line? Basically this line only. है ना? This line only. So suppose this is B. Suppose this is A. है ना? Yes or no? And this distance is how much? 10 kilometer. Right? AB is given as 10 kilometer. Anyone have any doubt in this? ये लाइन समझ में आया सबको? बेसिक है ना? ओके. नाउ शिप ए, राइट? शिप ए, जो शिप ये है, ना? ये फार्दर, ये नॉर्थ की तरफ है. इट इज गिवन. नाउ इट मूव्स इन वेस्ट. वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा बताओ? व्हिच डायरेक्शन इज वेस्ट? एवरीवन, वेस्ट इज दिस डायरेक्शन. यस और नो? है ना? वेस्ट इज दिस डायरेक्शन. और इसका स्पीड गिवन है, कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर. Velocity of A 20 km per hour. Okay, right? And B moves in north direction. B moves in north direction, right? B ऐसे move कर रहा है north direction में, right? इसका speed भी है 20 km per hour. So velocity of B is also 20 km per hour. है ना? Now, what is their distance of closest approach and how long do they take to reach it? ठीक है, अभी चीज बताओ, अब ये सवाल कैसे करेंगे, है ना? ठीक है, अब ध्यान दे आप पे. सबसे पहले एक चीज बताओ, राइट? What is the distance between? What is the initial distance between them? Tell me, what is the initial distance between them? Step by step, tell me. देखो कैसे सवाल सॉल्व करते हैं. 10 किलोमीटर, वेरी गुड. 10 किलोमीटर.
So if they have to meet each other, they have to cover at least this distance, yes or no? This relative distance, think about it. Actual distance might be more, but relative distance तो यही होगा ना. Yes or no? हाँ या ना? कॉमन सेंस सोचो एक बार, सोचो एक बार. सर इनिशियल डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, और क्या ही कवर करेगा. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, बहुत तरीके. इट कैन बी सॉल्व मल्टीपल. आई एम जस्ट गिविंग यू वन you know way of thinking. Now let me ask you this. Okay sir, for that velocity of b with respect to a क्या होगा? कॉमन सेंस सोचो. सर ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है? व्हाट इज 20 किलोमीटर पर आवर? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना? यस और नो? और विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही मान लो, किसी मान लो, डजंट मैटर, राइट? वो कितना है? 20, राइट? आई कैप जे कैप क्या है? माइनस आई कैप. यस और नो? हाँ या ना? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक, बहुत बेसिक. एंड व्हाट इज वेलोसिटी of b with respect to ground? Tell me. It is 20 j cap, हाँ या ना? स्टेप बाय स्टेप, बहुत बेसिक, कोई हाई फाई चीज नहीं है ना. नाउ you tell me, what is velocity of b with respect to a? Sir, it is velocity of b with respect to ground plus velocity of ground with respect to a. बेसिक, बच्चे की तरह, कोई फॉर्मूला नहीं रटेंगे, रटेंगे ही नहीं. सेम सर, बीच में ये होना चाहिए, राइट? तो obviously velocity of ground with respect to a is not given, right? But what is given? Minus velocity of a with respect to ground is given, right? So अब ये 20 minus 20 0 हो जाएगा. हाँ राइट संचित? संचित है ना? राइट. 20 minus 20 0 हो जाए ना संचित? अरे यस कैसे भाई? ये आई और ये जे है, दो अलग अलग डायरेक्शन है भाई. कॉमन सेंस, दैट्स वन थिंग, राइट? कॉमन सेंस है ना, राइट? और ये निगेटिव ऑफ निगेटिव है, बिकॉज वी ए रिस्पेक्ट टू जी इज माइनस 20 आई. हाँ या ना? टेल मी. सो इट इज 20 आई प्लस 20 जे. हाँ या ना? सो इफ यू सी दिस 20 आई माइनस 20 जे किस तरफ पॉइंट करेगा? टेल मी. It will point in which direction? You tell me. 20i minus 20j will point in which direction? In this direction, yes or no? First quadrant. Very good, right? So this is velocity of b with respect to a. ये विजुलाइज हो रहा है अब. यशस, तनिष, विजुलाइज हो रहा है ये. अब समझ में आ रहा है तुम लोग? कुछ कुछ बेसिक विजुलाइज करो, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये चीज. Now tell me, अगर तुमको क्या, तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए ना? What is magnitude of velocity of b with respect to a? Tell me, what is the magnitude? Everyone, जल्दी जल्दी. magnitude of vector क्या होता है? Correct. So it is 20 root 2 है ना? 20 root 2. 400 plus 400, right? Yes or no? Okay. यहां तक में किसी दिक्कत है? हाथ चालो. यहां तक में किसी को दिक्कत है? हाथ चालो. नहीं ना? अब तो यहाँ पे जब हम b रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं, सोचो इसका फिजिकल मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? समझ में आ रहा है इसका फिजिकल मतलब क्या हो रहा है? नाव्या, पुनीत, tell me, what is the physical meaning of this? How to solve it? How to think about these kind of problems? Tell me. Because if you understand this concept now, everything will be easy. When I say velocity of b with respect to a, which means
कि मैं बी पे मैं ए पे बैठ गया हूं, हाँ या ना? टेल मी, आई एम सिटिंग ऑन ए एंड आई एम लुकिंग एट बी, यस और नो? टेल मी, हाँ या ना? टेल मी दिस. If I'm saying velocity of b with respect to a, I'm actually sitting on a and looking at b. I'm the observer, right? Suppose you are the observer, right? And you are sitting on a and looking at b. So according to you, a would be at rest or motion. If you are sitting on a, according to you, a will be at rest or motion. Very good, Kratagya. Very good, Prahlad. Rest. And b will be in motion. Yes or no? Think about it. Yes or no? That is the physical meaning. अब तुमको समझ में आ रही है भाई, विजुलाइज कैसे करोगे? तुम विजुलाइज कैसे करोगे? राइट. जब भी दो चीज दिए है ना, तुम एक पे बैठ जाओ और दूसरे को देखो. नाउ टेल मी दिस. सपोज यू आर सिटिंग ऑन ए एंड लुकिंग एट बी. तुम तो भाई रेस्ट पे हो ना, तुम तो यहीं पे हो, तुम तो इसी डायरेक्शन में हो. बी इधर जा रहा है. सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, दिस line, this line and this line? What is the shortest distance? Tell me. क्या होगा शॉर्ट डिस्टेंस? सोचो, कॉमन सेंस. शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा? कभी ये दोनों मिलेंगे क्या? कभी ये लोग मिलेंगे? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी मिलेंगे? यस और नो? विल दे एवर मीट? थिंक अबाउट इट. नव्या? नो, राइट? वेरी गुड प्रहलाद. है ना? दे विल नॉट. बट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? सबसे पास में कब रहेंगे? सर, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक ऐसा, because that is the shortest distance ना. yes or no? हाँ या ना? समझो कॉन्सेप्ट, समझो. yes or no? tell me, sir, this this perpendicular will be the shortest distance. agree? tell me, हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ, चलो. सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? anyone have any doubt in this? raise your hand. crystal clear हो रहा है? सोचो, when you visualize things it will be much easier. okay, right. now tell me, ये distance तुमको पता है? what is this distance? अब geometry class 10th का concept geometry, right? geometry. ये AB कितना है? सर 10 है सर. ये एंगल कितना है? tell me, what is this angle? सर ये 20 है, ये 20 है, right? दोनों 20 है, तो tan theta कितना हो जाएगा? tan theta is equal to, tell me, what is tan theta? 20 by 20, which is equal to 1. So theta is equal to what? 45 degree. हाँ या ना? तो ये एंगल कितना हो गया? What is this angle? This angle and this angle both कितना हो गया? Actually हम लोग निकालते हैं तो ये निकालते हैं. This is for theta. So what is this angle? This is also 45 degree. ये सबको समझ में आ गया? हाथ चलो, जल्दी हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी. Right? Very good Sanchit, very good Darshan, very good Vasta, very good Bhavesh. Once again, okay. So we already know velocity, yeah, right? Velocity we already know, ना? ये vector जो ये red वाला vector, this is velocity of b with respect to a vector. This we already know, right? So what is the angle made by this with respect to x-axis? Tell me, what is the angle? Sir, it is I component, right? J component by I component. So it is 20 by 20. What is 20 by 20? 1. And if tan theta is equal to 1, so what is the value of theta? What is the value of theta? Prahlad, what is the value of theta? 45 degree. Very good, Puneet. Clear hai ye cheez? Everyone is clear on this? Now tell me, sir, अब तो ये simple हो गया sir, right? ये simple हो गया है ना? ये triangle मैं ऐसे बना दे रहा हूँ. So ये हो गया क्या? This is B, this is A, and this point suppose it is C. C. ये distance given है 10, right? तुमसे AC पूछ रहा है और ये angle given है कितना? 45 degree. What is AC? Step by step बताओ. What is AC? Perpendicular निकालना है, hypotenuse given है. Tell me. Step by step. Relative distance है ना? Awesome वास्तव. Correct. Right? है ना? Sir, AC distance is AB sine 45 degree. Right? Correct. Which is 10 into 1 by root 2.
which is 5√2, right? हाँ या ना? अब बताओ, तुमको ये मिनिमम डिस्टेंस पता है, तुमको एक दूसरे के बीच का वेलोसिटी पता है, तुमको टाइम निकालना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? टाइम, right, for closest approach would be what? Distance by speed. This distance is what? 5√2. स्पीड कौन सा होगा बताओ, स्पीड कौन सा होगा? ए का, राइट, बी का रिस्पेक्ट टू ए, यही होगा ना? यही होगा ना? यस और नो? टेल मी जानवी. सो विच स्पीड वी विल टेक? 20√2. वेरी गुड पुनीत. तो आंसर क्या हो गया? हाउ मच टाइम वी हैव टू? 1/4 सेकेंड. करेक्ट, ऑसम. ये सबको समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट आया? सॉरी, 1/4 आर, माय बैड, किलोमीटर पर आर है ना? माय बैड, माय बैड. 1/4 आर, राइट, इट इज इन किलोमीटर पर आवर, राइट पुनीत? है ना? पर आवर. ओके, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? रेज योर हैंड. एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? समझ में आया कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट? सात्विक, संचित, रायद, तनिष, एनीवन? जानवी, इकरा, दर्शन, भावेश? ओके, सो दिस इज बेसिक एप्लीकेशन. चलो अब रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है? ये तुम लोग का स्टार्ट हो गया, रिवर बोट प्रॉब्लम. ठीक है, सबको ध्यान देगा, रिवर बोट प्रॉब्लम. वेरी गुड रायद. लिखेगा सबको ये मेरे साथ, रिवर बोट प्रॉब्लम्स. ओके, है ना? काफी फेमस होता है. तो भाई पहले तो नदी बना लेते हैं, है ना? नदी बना लेते हैं हम, राइट? तो नदी बनाते हैं. सपोज ये मेरा नदी है, दिस इज माई रिवर, है ना? राइट? So see here, obviously, when we talk about river, so we take this thing that both the sides are parallel. Yes or no? That's what we take, ना? ये मत बोलना सर ये distance equal नहीं होता नदी में, right? If we consider that, okay? Yes or no? Now, when you talk about river boat problem, so what are the things that we know, or what would be the parameter that we might be discussing, right? Or we might be using. So first, velocity of boat with respect to ground. Yes or no? I'll just use small g. Yes or no? Velocity of boat with respect to ground. Next, velocity of river with respect to ground. Yes or no? Then third, velocity of boat with respect to river. Yes or no? हाँ या ना? ये तीन चीजें रहेंगी. Yes or no? Step by step. Anyone have any doubt? Now, velocity of river with respect to ground is called as absolute velocity. Absolute velocity of river. Yes or no? भाई रिवर फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, वही मैटर करेगा ना? राइट? और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोथ स्पेसिफिक ग्राउंड क्या हो गया? दिस इज एब्सोल्यूट velocity of boat. Anyone have any doubt in this? Anyone have any doubt in this? Yes or no? Tell me. और ये क्या हो गया सर? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर. तो अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो तो यहाँ पे रेस्ट में कौन होगा? टेल मी. इफ यू टॉक अबाउट दिस वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब तुम कहाँ पे बैठे हो? तुम कहाँ पे हो? रिवर, है ना? तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में कौन है? तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में कौन है? रिवर. वेरी गुड, करेक्ट, ऑसम, ऑसम. राइट, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ये सबको समझ में आ रहा है? अगर तुमसे बोला जाए सर ठीक है, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर का फॉर्मूला लिखने के लिए, क्या लिखोगे? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, भूल जाओ, रटना ही नहीं है, कुछ नहीं रटना है भाई, कुछ भी नहीं रटना है. कॉमन सेंस. क्या लिखेंगे? हमें वेक्टर पता है सर, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? प्लस, प्लस व्हाट?
टेल मी एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ, जवाब नहीं मिल रहा है मुझे, जवाब जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम पुनीत, ऑसम, करेक्ट प्रहलाद, है ना? ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब भाई साहब ग्राउंड मूव करता है क्या रिवर के रिस्पेक्ट में? टेल मी, ग्राउंड कभी भी रिवर के रिस्पेक्ट में मूव करता है क्या? वेरी गुड राइट, नो ना, नो। तो इट विल बी व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब समझ में आया तुम लोगों को? ये जो हमेशा तुम लोग कंफ्यूज हो, सर पता नहीं कब प्लस आता है, पता नहीं कब माइनस आ जाता है। नाउ इज इट क्लियर नाउ व्हेन इट इज प्लस, व्हेन इट इज माइनस, right? Okay, very good Puneet. Now if you transpose this, tell me, do think about it, right? इसका ये suppose a लिख लो, अगर तुम इसमें इसको transpose कर लो, है ना, transpose this to this side, right? Let us see. So it will be what? If you transpose this to this side, don't you think it will be velocity of boat with respect to ground? Okay, Nitin, right? I'll explain, don't worry. It would be what? Velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground. सर ये भी तो सही है ना, आर आर यहाँ पे आ रहा है, यस और नो, हाँ या ना? The only thing that you have to see, भाई बीच में क्या आ रहा है, right? So this is true, this is also correct, this is also correct, the question B is also correct, right? So that is the thing that you have to worry about. Okay, so Nitin, I'll explain once again. So when we talk about river boat problem, we have three different velocities. First, absolute velocity of boat, which is velocity of boat with respect to ground. Absolute velocity of river, which is velocity of river with respect to ground. And then relative velocity of boat with respect to river, right? Now, when we talk about velocity of boat with respect to river, we assume, right, or we can imagine that we are standing on the river. So river is at rest according to us, which means it will be almost like still water. हाँ या ना? Right? Because कभी कभी ये इसका मतलब है कि what is the velocity of boat with respect to still water? It is this only. Yes or no? Right? Okay. So using the basic understanding, velocity of boat with respect to river is velocity of boat with respect to ground plus velocity of ground with respect to river. But obviously ground will not move with respect to river. No, it's opposite, right? So plus velocity of ground with respect to river is actually negative of velocity of river with respect to ground. ठीक है? ये सबको समझ में आ गया? Everyone got this? Raise your hand. Yes or no? Hasini, समझ में आया? Hasini, Aditya, अनुभव, अवनी, भावेश, प्रहलाद, इकरा, सात्विक, नव्या. Clear? Is this clear? Tell me, is this clear? बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो बहुत इजी है. अब तुम सोचो, अब सारे सर्कमस्टेंसेस सोचो. सपोज यू आर एट पॉइंट, दिस पॉइंट A, right, and there is this point B, right, and suppose river is flowing in this direction, river is in this direction. अब imagine कर लो, right, just imagine this, just imagine. Now tell me this, right, case one, where you can move, right, where you can move. So suppose case one is this direction, right, case two is this direction, right, this is case one, this is case two. Now if you see Prahlad, यहाँ पे position नहीं है ना, यहाँ पे velocity है. There are two different things, Prahlad, right? Vectors mean, right? See, what you're saying is initially fine, right? है ना? It is final vector minus initial vector, right? Understood? That's what you're saying. But it's a velocity, not position. Got it? Okay? है ना? Okay. Now, let me ask you this question. Suppose if someone wants to go from A to B directly, A से B directly जाना है, and this depth is D distance. This is the width, right?
ए से भी डायरेक्टली जाना है तो वो केस 1 से जाएगा केस 2 से जाएगा? सपोज यू हैव टू कवर शॉर्टेस्ट पाथ, दो 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 है, उसको डायरेक्टली बी पे पहुंचना है, डायरेक्टली बी पे पहुंचना है। इमेजिन करो, सोचो, वेरी गुड वास्तव, प्रहलाद खुद सोचो ना, तुम अगर ए से सीधे चाहोगे तो तुम इमेजिन करो ना क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल बी dragged, right? If you actually take this position, right? So तुम्हारा क्या होगा, think about it, this is your position, velocity of boat with respect to ground, and this is velocity of river with respect to ground. So your actual velocity will be what, this direction now? Yes or no? Ayana, understood now? But right, if you take this case, second case, if you take like this and then this, then your final velocity will be like this. Yes or no? Okay, so you have to take case 2. So we'll discuss both the cases. So what is case 1? Case 1, right? Case 1 is what? For shortest time. To reach opposite, sorry. Opposite side. ना एक और चीज देखो, तुमको लगता नहीं है अगर तुम डायरेक्टली निकलोगे ए से बी की ओर, राइट है ना, तो तुमको कम टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने में, यू विल रीच समवेयर ओवर हियर, बट टाइम टेकन विल बी लेस? यस और नो? यस और नो? यस, राइट। अब ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ आ जाओ, ये सबको समझ में आ रहा है? तो व्हेन यू टॉक अबाउट केस वन का डायग्राम कैसे बन रहा है, केस वन कैसे बन रहा है, मैं अलग से बना रहा हूँ उसको। सर केस वन में this is what, this line is what, tell me what is this line, what is this velocity, what is this velocity case 1 के लिए, what is this velocity? This is velocity of boat, right, with respect to ground, हाँ या ना? यस और नो? डायरेक्टली वो जा रहा है ना केस 1 में, मतलब डायरेक्टली से सीधे वो जा रहा है, एक्चुअली दिखेगा कैसे, वो डिफरेंट है, यस और नो, राइट? और what is this? So this is velocity of river, velocity of river with respect to ground. And what would be the velocity of boat with respect to river? Sir, it will be like this. Yes or no? हाँ या ना? Anyone have a doubt in this? Tell me, raise your hand. Anyone have any doubt in this? तो A पॉइंट से चलेगा B पॉइंट की तरफ, बट वो एक्चुअली पहुंचेगा C पॉइंट पे, राइट? धक्का देगा ना भाई, ये पानी जो है वो धक्का देगा ना, हाँ या ना? यहाँ पे किसी को दिक्कत है? टेल मी, यहाँ पे किसी को दिक्कत है? नहीं? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बताओ, ये सही है? Is this correct, or is there something wrong with this? You tell me this. Is this correct? Exactly, प्रहलाद, वेरी गुड प्रहलाद भाई, ये गलत है, क्यों गलत है? देखो, velocity of boat with respect to river, मैंने क्या बताया? Sir, velocity of boat with respect to ground minus velocity of river with respect to ground. Yes or no? हाँ या ना? Tell me, हाँ या ना? हाँ, तो बट ये क्या, ये गलत हो गया ना? यस और नो? सर, तो दिस इज नॉट दिस, राइट? एक्चुअली ये नहीं है, पॉइंट ऑब्वियसली सी हो जाए, बट द वेलोसिटी, इफ यू सी द वेलोसिटी, इट विल बी व्हाट, दिस माइनस हो जाएगा ये, हाँ या ना? माइनस है ना, माइनस वी आर जी, राइट? सो टेक्निकली, ध्यान दो, सबको ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, इफ यू जस्ट सी द वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी व्हाट,
वी बी जी जो कि इस डायरेक्शन में है, माइनस माइनस व्हाट, टेल मी, वी आर जी। तो वी आर जी रिवर का ग्राउंड रिस्पेक्ट में ऐसे है, तो निगेटिव में कैसा हो जाएगा, निगेटिव में ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? स्टेप बाय स्टेप, नहीं समझ में आ रहा पूछो। राइट, और ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। सबको समझ में आया ये, हाँ या ना? स्टेप बाय स्टेप आप समझो। एनीवन हैव डाउट इन दिस, रेज योर हैंड। एनीवन हैव डाउट इन दिस? वेरी गुड, ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो ये भाई ये पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन, राइट, एंड दिस इज द वेलोसिटी। आई होप कि तुमको ये पूरा पूरा क्लियर हो गया अच्छे से कि व्हाट्स द डिफरेंस। सर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाए तो सी पॉइंट पे पहुंचेगा, बट ये जो आप ड्रॉ करते हो ये पोजीशन है, ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर डायग्राम नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम ये होगा। एनीवन हैव एनी डाउट ऑन दिस? ओके, अब ध्यान दो। ओके, राइट, ऑसम। सो नाउ, नाउ ठीक है, अब तुमसे पूछा जा रहा है सर यहाँ पे ये है वी बी आर, अब बताओ ये जो वी बी आर इसका डायरेक्शन ऐसा है ना, इसका एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट क्या हो गया, क्या नहीं सर? वी बी आर इज इक्वल टू, टेल मी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। वी बी आर, so this I suppose this angle is theta, suppose this angle is theta, V B R cos theta I cap, है ना, सही, माइनस, राइट, इसको अगर ये ले लेते, ये डायरेक्शन छोड़ दो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। वी बी जी माइनस वी आर जी, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना। अब यहाँ पे वैल्यू तुम पुट कर दोगे, टेल मी, कैन यू पुट द वैल्यू? स्टेप बाय स्टेप टेल मी। वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन है, व्हाट इज वाई डायरेक्शन? अगर तुम सोचा सर बोट का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इसका इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका कंपोनेंट यस और नो, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यस और नो, विच इज वी बी आर इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना? हाँ या ना? स्टेप बाय स्टेप सोचो भाई, ये इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यही होगा ना। इफ इट इज टू मच मैं यहाँ पे समझा के रोक दूंगा, राइट, समझो, मैं एक और क्लास ले लूंगा कल रात को, परसों रात को, डजेंट मैटर, है ना, बट चंक में थोड़ा थोड़ा, है ना। तो बताओ, अगर तुमसे पूछा है सर ये डिस्टेंस कितना था, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना था, ऊपर देखो, ये डिस्टेंस कितना था, डी था, राइट। तुमसे पूछा है भाई कितने देर में, व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस, इन दिस केस टेल मी क्या होगा? यस 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 यस, जस्ट थिंक अबाउट इट फर्स्ट, टेल मी क्या होगा सर, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। बट भाई डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, एक्स कॉम्पोनेंट एक वाई कॉम्पोनेंट, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, एक्स की वाई, ये डिस्टेंस एक्स में है कि वाई में, वाई में है ना, तो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी किस में लेंगे हम, एक्स में कि वाई में लेंगे, वेलोसिटी भी वाई कॉम्पोनेंट लेंगे ना, यस और नो, यस और नो, करेक्ट, यस। सो टाइम टेकन क्या होगा सर, डिस्टेंस इज डी, वेलोसिटी इज दिस, वी बी आर cos theta। Anyone have any doubt in this? Anyone have any doubt in this? Raise your hand. बताओ,
x में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन x? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन x? क्या होगा सर? वेलोसिटी इन x, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू x इनटू टाइम टेकन, यस और नो? हाँ या ना? एनीवन हैव एनी डाउट? यहां तक बताओ। ये अज्यूम करो ना भाई, कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन, डजंट मैटर, ये एक जनरल फार्मूला है ना, वेक्टर फार्मूला है, राइट? जनरल फार्मूला है। कैन आई से सर वेलोसिटी ऑफ बोट इन x can also be written as velocity of, think about it, right? मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ, इसको इस साइड मूव कर दो, राइट? वेलोसिटी ऑफ, मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ just boat, right? Just boat is equal to velocity of just boat, velocity of river plus velocity of boat respect to river, हाँ या ना? ग्राउंड को मैं अगर हटा दे रहा तो यस और नो? स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो यार, ध्यान दो, हाँ या ना? स्टेप बाय स्टेप समझो। ये क्या है सर? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट x component plus velocity of boat y component is equal to velocity of river x component plus velocity of river y component plus velocity of both respect to river x component plus velocity of both respect to river y component, हाँ या ना? हाँ या ना? स्टेप बाय स्टेप सबको एक्स वाई में तोड़ दे रहा मैंने। आई जे, आई जे, आई जे, मैं तोड़ने के लिए समझा रहा हूं, राइट? व्हाट वी डू प्रहलाद, कि हम कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन को 1 डायमेंशन में ब्रेक कर सकते हैं ना, राइट? यस और नो? एनी जनरल इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ just x axis or just y axis, yes or no? Right? So can I say that sir velocity of b with respect to x is x component को equate करो तो just equate x component, this and this, velocity of river with respect to x plus velocity of both with respect to x and velocity of both with respect to y is nothing but velocity of river with respect to y plus velocity of both with respect to y. Got it? हाँ या ना? हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? मैंने सेम इक्वेशन है, बस y और x में कॉम्प्लीमेंट में तोड़ दिया है। सेम इक्वेशन, दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन सेम है भाई। ये जनरल फॉर्म है और ये x y में टूटा हुआ है। अब बताओ, थिंक अबाउट इट। ये जो है y डायरेक्शन में रिवर मूव करता है क्या? रिवर क्या है? x में फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस बिकेम 0, राइट? एंड दिस बिकेम दिस व्हिच इज दिस। आई गेस अब सबको समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप, टेक योर टाइम, ट्राई टू ग्रास्प इट, राइट? आई वोंट hurry up, I won't teach anything extra, just grasp this concept. Is this clear? Tell me, is this concept clear? Raise your hand, everyone. स्टेप बाय स्टेप मैं ये भेज दूंगा, है ना? वेरी गुड, ऑसम। तो अब बताओ तुमको, अगर अब निकालना है सर, अब इसमें है ना, अब अगर x डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ, टेल मी, velocity of boat in x direction into time taken. And what is this? This is this, na? Sir, it is what? Velocity of boat in x direction is nothing but velocity of river in x direction plus velocity of boat with respect to river in x direction into time taken. हाँ या ना? हाँ या ना? Step by step, हाँ या ना? Right? Awesome. तो सर x डायरेक्शन में ही तो वेलोसिटी है इसका। x डायरेक्शन में क्या है? x डायरेक्शन में इज नथिंग बट व्हाट? velocity of river, but velocity of boat with respect to river in x direction, tell me, इसका x डायरेक्शन में क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? टेल मी।
the component of VBR in x direction will be negative or positive? Negative or positive? Tell me. Negative. Very good. Now we are very good, Nitin. Negative. Correct है ना? Minus. बताओ ये एंगल है तो ये sin थीटा होगा cos थीटा होगा? VBR sin थीटा, VBR cos थीटा. Step by step. Sin theta cos theta. Sin theta. Awesome. Very good. So VBR sin theta. और टाइम का वैल्यू हम लोग निकाला ना? टाइम कितना था? डिस्टेंस बाय VBR cos theta. ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला हो गया है. जनरल राइट. रटने की जरूरत नहीं है. वैल्यू दिया है तो सब कुछ निकल जाएगा. बट जनरल कंडीशन हो गया. दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन x. दिस इज टाइम टेकन. ये पूरा का पूरा सारा स्पेशल केस अब बन जाए तुमसे. ये सबको समझ में आया? नाव्या समझ में आया? पुनीत समझ में आया? संचित नहीं तो प्रोसेस समझ में आया? जानवी प्रोसेस समझ में आया? तनिष यू गॉट दिस? तनिष, कृतज्ञा, अवनी, अनुभव समझ में आया? अनुभव, हासिनी. प्रोसेस देखो. प्रोसेस राइट है ना? ओके ऑसम जानवी. अब देखो ना स्पेशल केसेस आता है इसका. केसेस क्या होता है? केसेस होता है मिनिमम टाइम. केसेस देखो स्पेशल केसेस. मिनिमम टाइम केस 1. स्पेशल केस 1 राइट. कंडीशन ये जनरल है. दिस इज टोटली जनरल थिंग है ना? कोई भी वेलोसिटी दे दो, कुछ दे दो, ये बन जाएगा. अब स्पेशल केस देते हैं. कंडीशन तुम लोग का स्पेशल केस ही पढ़ना है. ठीक है? तो टेंशन मत, तुम लोग कंडीशन ही पढ़ना है. कंडीशन व्हेन द बोट crosses the river in shortest interval of time. ठीक है? राइट. सो इस केस में हम लोगों ने क्या लिया था? ये थीटा एंगल से मूव कर रहा था है ना? ठीक है? तो ध्यान दो इस केस में टाइम क्या होना चाहिए? टाइम शुड बी मिनिमम. तो टाइम मिनिमम कब होगा? टेल मी व्हेन द टाइम विल बी मिनिमम. टाइम इज अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट? सो टेल मी व्हेन टाइम वुड बी मिनिमम. जब थीटा एंगल कितना हो? टेल मी. डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम. टाइम मिनिमम के लिए डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम. Yes, right? है ना? So tell me what would be the time? Maximum मतलब क्या है? Theta is minimum. Cos theta का वैल्यू क्या होगा? नहीं ये मैक्सिमम हो जाएगा ना? Right? T is equal to D by VBR cos theta. So this should be maximum. This should be maximum. Maximum कब होता है? जब cost का वैल्यू क्या हो? 1. Just D by VBR. हाँ या ना? Yes or no? So that's what I said, right? जब मिनिमम जाना होगा तो एंगल कितना होना चाहिए? 0, right? है ना? cos theta should be 1, so theta should be 0. अब समझ में आया? That is a special case जो तुम लोग पढ़ना है. If shortest time need to be taken, then the boat will just move in this direction, right? Yes or no? Theta should be this 0, right? Anyone have any doubt in this? सबको समझ में आ रही है? Raise your hand. Raise your hand. हसनी वास्तव, I'll just send this recording also in the group. ठीक है? मैं ये recording भी भेज दूंगा. Okay? Awesome. Now case 2 तुम लोग खुद बताओ. Case 2. Shortest path. Shortest path. Or from point A to point B. From point A to B. Directly जा रहे हैं. ओके नितिन, आई जस्ट रिपीट. इसको खत्म करने दो हमको, है ना? इस केस में अगर तुमको डायरेक्टली जाना है, तुमको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, यहां से यहां जाना है, राइट?
तो ये जो BC डिस्टेंस कितना होना चाहिए? What should be the BC distance? What should be the X distance? If you just want to go from this point to this point, then what should be this distance? BC कितना हो जाएगा? Tell me, Nitin. If you just want to go from A point to B point, you want to reach at B point. Tell me, what should be the distance BC then in that case? Navya? Anyone? ये कॉमन सेंस है भाई. जीरो ना भाई, जीरो. तुमको यहां से यहां डायरेक्ट पहुंचना तो ये जीरो हो जाएगा. यस, एग्जैक्टली नितिन. राइट, यस और नो? So if you want to go from point A to B, this x should be equal to 0. Yes or no? This x should be equal to 0. हाँ या ना? Tell me, हाँ या ना? तो x का फॉर्मूला क्या होता है? x का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर इनटू sin थीटा into d by VBR cos theta. This is 0. ये 0 होना चाहिए. Which means VR minus VBR sin theta should be equal to 0. हाँ या ना? हाँ या ना? So निकल जाए यहाँ से. सर sin theta का वैल्यू कितना होना चाहिए? Sin theta should be velocity of river by velocity of both respective river. Understood? ये तुम्हारा सेकंड स्पेशल केस है, तुमको सिर्फ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है. अब समझ में आया कहां से आया, कैसे आया? भाई क्या भाई प्रहलाद, तुम पूछ लो ना एक बार, ऑडियो ऑन करके पूछ लो एक बार, तुम पूछ क्या रहे हो? व्हाट इज वाई? तुम कुछ तुमको डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, राइट? तुम एक्स में ही एक्चुअली ट्रैवल करो, रिलेटिवली तुम एक्स में ही ट्रैवल कर रहे हो ना. यस और नो? तुम ऐसे जाओगे घूम के ऐसे ही यहीं पे आ जा रहे हो, राइट? तो रिवर के रिस्पेक्ट में तुम कैसे ए से बी की ओर जा रहे हो ना, तो ये डिस्टेंस तो कवर ही नहीं कर पा रहे, राइट? दैट इज द केस दैट वी वांट, है ना? तो उस केस में ये जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए थीटा, वो ये होना चाहिए. दैट्स द थिंग. तुम किस एंगल पे निकलोगे? व्हाट वुड बी द एंगल? द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट वुड बी द एंगल, राइट, दैट यू शुड मूव इन so that you just reach the point opposite to point A. Got it? Got it, Pehnad? है ना? अब बताओ, यहाँ पे मैंने रिवर का डायरेक्शन इधर लिया ना, अगर रिवर का डायरेक्शन उल्टा होगा, रिवर डायरेक्शन उल्टा होगा, तो इक्वेशंस में भी वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी. यस और नो? क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये सबको, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सबको? रेज योर हैंड. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, राइट. सो मैं क्या करूंगा? ओके, जस्ट लेट मी पॉज. So guys, how many of you use Telegram? Raise your hand. How many of you use Telegram? Everyone use Telegram now, right? So डाउट सॉल्विंग के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है? आशीष को बोलकर डाउट सॉल्विंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ. मैं सारे नोट्स एंड ऑल टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है? ओके, मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप बना ही देता हूँ. दैट वुड बी बेटर, राइट? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर हो गया? और डोंट वरी अबाउट द टेस्ट यार, डोंट वरी अबाउट द टेस्ट, राइट? इट्स फाइन. नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, राइट? डोंट वरी अबाउट द टेस्ट. एक कॉन्सेप्ट ना, बाकी कॉन्सेप्ट तो आता है ना, है कि नहीं? डोंट वरी अबाउट द टेस्ट, जस्ट गिव इट एज अ प्रैक्टिस. ओके, जस्ट गिव इट एज अ प्रैक्टिस. ओके, okay, I'll just make a group right now and I'll send the link. All of you join there. I'll send this notes. ठीक है? हाँ, वे सब क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो, राइट? मैं इस हफ्ते ना 2-3 क्लास लूंगा, ठीक है? हाँ, मैं डोंट वरी, आई हैव स्पोकन टू हिम यस्टरडे, राइट? एक्चुअली वो भी नया नया है ना, तो थोड़ा थोड़ी समझ में आई कैसे कैसे क्या हैंडल करना है, तो आई स्पोक टू हिम यस्टरडे. डोंट वरी, ठीक है? एनीवेज आई कीप ऑन हेल्पिंग यू गाइज, ठीक है? डोंट वरी, ठीक है? ओके, मैंने उसको भी बोला है, राइट, टू रिफर टू प्रिपेयर प्रॉपरली, है ना? ठीक है? गॉट इट? ओके, जस्ट गिव लाइक हिम आल्सो लाइक 1-2 वीक्स, राइट? है ना? बिकॉज अभी 1-2 हफ्ते ही हुए ना उसको, अभी एडजस्ट भी करना था. ओके, राइट?
एनीवेज आई विल बी हेल्पिंग यू आउट एनीवेज, ठीक है? ओके दर्शन, नाव्या, मैं एक ग्रुप बना दे रहा हूँ, तुम डायरेक्टली उसी में डाउट्स पोस्ट कर दो अभी के लिए, ठीक है? प्लस आई विल टेक टू मोर क्लासेस, नॉट वन, टू थ्री मोर क्लासेस, जब भी मैं फ्री होऊंगा ना मैं लेते रहूंगा, ठीक है? ओके, चलो, ओके, आई जस्ट सेंड द ग्रुप, राइट? चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ हैप्पी संडे, बाय बाय, राइट?